and welcome to Explore with Aisha. Today we will be talking about Canadian healthcare system. But before we start the topic for today, please like, follow, share and subscribe to our channel so you can support our channel as well as spread the information provided. If you are new to Canada, then you might have many questions in your mind. What is Canadian healthcare system? Who provide money for the Canadian healthcare system? Is Canadian healthcare system free? What is OHIP card? What OHIP stands for? How I can get my health card? Am I eligible for a health card? Keeping all these questions in mind, today we will be talking about the Canadian healthcare system. We will try our best to answer some of these questions in this vlog. So let's start talking about the Canadian healthcare system. कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम, जिसका नाम मेडिकेयर भी है, यहाँ के रहने वालों को हाई क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है. दिस प्रोग्राम इज फंडेड बाय द टैक्सेस पेड बाय द टैक्स पेयर्स. As we will focus more on the province of Ontario, so health plan in Ontario is known as OHIP or Ontario Health Insurance Plan. ये प्लान ओंटारियो के रहने वालों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का जिम्मेदार होता है. Ontarians who qualify can access a variety of healthcare services in their communities. Through OHIP, the province pays for many of the health services that you may need. लेकिन सबसे पहले आपको हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और जब आपको अपना ओंटारियो हेल्थ कार्ड मिल जाए तो आप हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. Your health card is a proof that you are covered by OHIP. That is why you need to show it every time you see a doctor, visit an emergency room, have a medical test, or go for a surgery. Now let's talk about who is eligible for OHIP card. अगर आप कैनेडियन सिटीजन हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं, you may apply for public health insurance plan. To be more specific, Canadian citizens, permanent residents, or a newcomer जो कि approved हो by the Ontario Health Insurance Act, they can apply for OHIP card. To qualify for OHIP, you must meet all the below qualification. सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि योर प्रिंसिपल होम इज़ इन ओंटारियो. सो आपका जो परमानेंट रेजिडेंट है वो एड्रेस ओंटारियो का ही है. सेकेंडली कि यू आर नॉट अवे फ्रॉम ओंटारियो फॉर मोर देन 30 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months that you have lived here. That means that you must be in Ontario for 153 days of the first 183 days that you live in Ontario. और जो थर्ड पॉइंट है that you are in Ontario for at least 153 days in any 12 months period. तो ये तो वो must haves हैं जो कि इन सब का आंसर yes होना चाहिए. तो then you are eligible to apply for OHIP. अच्छा, इसके अलावा ये जो मैं ऑप्शंस अब आपके सामने रख रही हूँ, इन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ज़रूर आप पे, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट शुड अप्लाई टू यू. That you are a Canadian citizen or permanent resident. You are a protected person, also called a conventional refugee, or you are registered as an Indian under the Indian Act. This is for Aboriginal people of Canada. और जो fourth point है वो ये है that you applied for permanent resident and immigration, refugee and citizenship Canada, यानी IRCC. They have confirmed that you meet the eligibility requirements to apply for permanent resident in Canada. तो इन चारों पॉइंट्स में से किसी एक के लिए भी अगर आप yes कहते हैं तो then you are eligible to apply for OHIP. Visitors to Ontario from other Canadian provinces and territories or from outside Canada do not qualify for OHIP. If you are a Canadian, find out what your province or your territorial plan or private health insurance plan will cover before you take your trip to Ontario. हो सकता है आपको प्राइवेट इंश्योरेंस बाय करनी पड़े, तो गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ योर प्रोविंस. If you are a visitor to Canada and you are not a Canadian citizen or a PR holder, then of course you have to get your private medical insurance, which is very necessary, so that if there is a medical emergency, you are all covered. Now, as we have discussed the eligibility of OHIP, now let's talk about how you can apply for OHIP card. सबसे पहले बात करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए होंगे OHIP अप्लाई करने के लिए.
The first document is proof of citizenship or OHIP eligible immigration status, such as birth certificate or your passport. Second is proof of residency in Ontario, including the home address with postal codes. Your driving license or lease paper और रेंटल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स और पे स्टब्स, ये सब आप इसके लिए यूज कर सकते हैं. थर्ड इज द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्प्लेज बोथ योर नेम एंड योर सिग्नेचर्स. इसके लिए पासपोर्ट और पीआर कार्ड यूज किया जा सकता है. अच्छा जी, जैसे ही आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, आप ओहिप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए आपको सर्वेंट्स ओंटारियो के करीबी ऑफिस या सेंटर पे जाना होगा. Ontarian resident who are eligible for OHIP will receive an OHIP card within 4 to 6 weeks of submitting the application. यानी 4 से 6 हफ्तों में जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे for OHIP, you will get the physical card. During this wait time, आप महदूद हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे जा सकते हैं. हम आने वाली वीडियोस में आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के बारे में डिटेल से बताएंगे, मगर आपके रेफरेंस के लिए we will be sharing the link below. Now let's talk about what services are covered under OHIP. OHIP covers all care deemed medically necessary, including hospital and doctor visits, but generally does not provide prescription, dental or vision. हमने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए जिसमें हम बताएंगे आपको what services are in particular covered by OHIP. Your visits to doctor, they are covered. Hospital visits and stays, they are covered. Lab testing in community labs or hospitals, that is covered. Medical or surgical abortions, eligible dental surgery in hospitals, eligible optometry, which is eye health services, and podiatry, which is foot health services, and some of the ambulance services as well. They are also covered. Now let's talk about things that are not covered by OHIP. So there are some services that OHIP does not pay for, such as prescription drugs provided in a non-hospital setting, dental services provided in a dentist office, eyeglasses, contact lenses, laser eye surgery, cosmetic surgery. So these services, they are not covered under OHIP. For some of the treatments, OHIP, it pays a part of the cost. For example, some elective services from your doctor, podiatry treatments, or dental services in the hospital. We recommend that you talk to a healthcare professional to find out if a procedure or treatment is covered by OHIP or not. You can also contact the Ministry of Health info line. We will share their numbers in the description box for you. You can also buy private insurance to pay for some services that are not covered by OHIP. Some employers, they provide healthcare benefit plans that cover some of these additional costs. So आप उनको स्टडी कर सकते हैं, उन प्लान्स को, और उनके लिए ऑप्ट कर सकते हैं. So then you are covered for the services. Those are not covered under OHIP. अब आपका OHIP कार्ड आपके पास मौजूद है. Now next step would be to have a family doctor. आपका फैमिली डॉक्टर ना सिर्फ आपका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करता है, बल्कि आपको हेल्थ रिलेटेड एडवाइस भी करता है. फैमिली डॉक्टर, जिसको जीपी यानी जनरल प्रैक्टिशनर भी कहा जाता है, they will be your first point of contact for any health related issues or services required. जरूरत पड़ने पर आपका जीपी आपको स्पेशलिस्ट को भी रेफर कर सकता है. Now let's talk about some ways to look for a family doctor. As you are responsible for getting your self-registered with a family doctor, not the health department. So ये आप पे मुनहसर है कि आप sooner the better अपने आप को रजिस्टर करते हैं with a doctor, so he can or she can be called your family doctor. There are few ways you can look for a family doctor for yourself and family. सबसे पहले तो आप अपने एरिया में फैमिली डॉक्टर तलाश करने के लिए ओंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म केयर की प्रोवाइडेड हेल्थ कनेक्ट की वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं. हम इसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर देंगे. सेकेंडली, आप अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव से भी किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में मालूम कर सकते हैं. कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स की वेबसाइट भी आपको डॉक्टर सर्च करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है. You can also ask nearest hospital if it has a family practice unit. Another resource could be a local settlement agency. They can guide you as they might have a list of doctors who are accepting patients. Now you know what resources you can explore to look for a family doctor.
जब भी आप फैमिली डॉक्टर की सिलेक्शन करें तो चंद चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, उनको जहन में रखें। सबसे अहम तो ये है कि सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि आपका सिलेक्टेड डॉक्टर न्यू पेशेंट्स एक्सेप्ट कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस डॉक्टर को आप सिलेक्ट करें वो पेशेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहा हो सकता है उनकी कैपेसिटी फुल हो और वो न्यू पेशेंट्स ना एक्सेप्ट कर रहे हो। Secondly, keep in mind your language preference and if you have a gender preference as well. It is also important to know if there is a medical lab with basic tests that can be done or pharmacy near the doctor walk-in clinic. क्योंकि अगर आप की वॉक-इन क्लिनिक के साथ ये सहूलत भी मुहैया होगी तो ये एडेड बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। Lastly, you might want to know which hospital does your doctor send patients to, ताकि आपको पता चल सके कि वो हॉस्पिटल आपके घर से कितना दूर है। All right, now you have all the information that you need to make a decision regarding your family doctor. So keep in mind these points when looking for a family doctor. अब बात करते हैं कि if you want to be referred to a specialist, what is the procedure? जैसा कि हमने पहले भी बात की कि आपके फैमिली डॉक्टर आपको स्पेशलिस्ट को रेफर करने का काम भी करते हैं, लेकिन अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने स्पेशलिस्ट को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन जस्ट कीप इन माइंड दैट यूजुअली आपका जीपी ज़रूरत पड़ने पे आपको स्पेशलिस्ट को रेफर करता है और अपॉइंटमेंट भी वही बुक कराते हैं। मगर अगर आप किसी स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ एनी वैलिड रीजन सच एज लैंग्वेज प्रेफरेंस, close to your residence or any other reason which is really valid, then let your GP know. In that case, your GP will analyze the situation and if possible, will accommodate you on the basis of your requirement. यहाँ ऐड करते चलें कि recently Ontario, they have introduced a plan in which pharmacists in Ontario are able to prescribe certain medication for 13 different medical conditions, such as pink eye, skin rash, eczema, and heartburn. So if you need assistance in those areas, you can also consult your pharmacist rather than going to a walk-in clinic. जी अब बात करते हैं ER के बारे में, which is emergency services. अच्छा, अगर आपको कोई you have an urgent situation, it's a life-threatening situation, and you have to go to the emergency, तो आप डायल कर सकते हैं 911 on your telephone. You will be connected to an operator who will send an ambulance to your location. अच्छा, एम्बुलेंस में स्टाफ होता है पैरामेडिक का जो कि आपको फौरी तौर पे फर्स्ट एड और इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। Just for your information that you are usually required to pay a portion of the ambulance services. So to learn more about this, I will have a link in the description box. तो उस पे आप जा सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन इसके बारे में हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इमरजेंसी के बारे में ये भी बता दें कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं दे आर यूजुअली ओपन 24 hours a day, 7 days a week. If you do not have OHIP coverage, then you have to pay for any services you receive at the hospital. जब आप ER पे पहुंचते हैं तो you will see a clerk who will register you by asking you to provide your name and address in Ontario, your health card or your insurance plan if you do not have OHIP. And of course your family doctor's name and your emergency contact numbers. Once you are registered, our triage nurse will determine which area of care will see you next. If you have never been to a hospital in Canada, knowing what to expect from a hospital visit can be different. So there are some tips that you have to keep in mind before you go to an ER. First tip is that because the wait time in the ER, it can be long. So it's a good idea to have a friend, your spouse, a relative, your partner, or someone you trust with you who can speak on your behalf if needed. Acha, while you are waiting at the ER, all the questions for the doctor आप वो लिख लें ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ डू ब्रिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेडिकेशंस यू हैव बीन टेकिंग, तो ये अपने पास आपके रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, आपकी कोई पास्ट रिपोर्ट्स हैं, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई एलर्जी आपको किसी चीज़ से है, तो ये ज़रूर लिख लीजिए, लिख के रख लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ऑल्सो राइट डाउन द नेम्स ऑफ द डॉक्टर्स एंड द केयर गिवर्स यू सी।
आप जहाँ पे जो आपके टेस्ट होंगे या आपके प्रोसीजर्स होंगे, तो उनके बारे में भी you have all the right to ask the questions. And especially before you sign any consent forms for a procedure, make sure you read it thoroughly, you understand it, and if you have time to get a second opinion, do that as well. Don't be afraid to ask questions. This is really, really important. You have a question in mind, make sure you ask the doctors. Why do I need to have this procedure? Why this medicine is given to me? ये इंजेक्शन मुझे क्यों लगाया जा रहा है? इस इंजेक्शन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? क्योंकि ज़ाहिर है इमरजेंसी रूम होता है, वहाँ पे केयर गिवर्स बिजी भी होते हैं, तो दे ट्राई टू एक्सप्लेन यू, बट कई दफ़ा एक लैंग्वेज का भी बैरियर होता है, तो मेक श्योर that you, if you're not understanding what they're trying to explain, ask them to come back again and explain you so you understand each. Many hospitals offer on-site, in-person translation services for many languages, including sign language as well. So if you or your family member would feel more comfortable speaking in another language, you may request for a translator or a person who can speak in your language, so the whole process becomes very easy for you. In an emergency situation, if in-person translators are not available at the hospital, you can request for a phone call. So one of your family or friend, the one you really trust, आप उनको कॉल मिला सकते हैं, डॉक्टर से उनकी बात करा सकते हैं, अपने क्वेश्चंस उनके थ्रू डॉक्टर तक पहुंचा सकते हैं. So that will make the whole communication process free of hiccups. You can also use Google Translator for this as well. It is time to end our video for today. Please like, follow, share, and subscribe to our channel. Also, make sure to watch our next video as we will be talking about another amazing topic. So take care of yourself. Till then, bye-bye.